Hello everyone, today we will be learning about Taylor's theorem in one variable. It's very important theorem. We will be learning Taylor's theorem in two variable as well. So if this concept gets clear, it becomes more easy to understand the Taylor's theorem in two variable as well. So let's start with it. So what is this theorem says? When given function is f of x plus h is a function of h, then this we can expand it in ascending powers of h. मैंने ये थ्योरम को दो तरीके से लिखा है, यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2 मैंने दिखाया है. Depending on how the given function is given, like if it is given in the format of f of x plus h, we can use this formula, which is number 1, and if the given function is in the form of f of x, then we can use this number 2 formula. Now if you look at the formula, it looks like a quite complicated and long, तो वो याद करने के लिए भी काफ़ी difficult होगा, but one thing is there, you don't have to by heart it. If you understood it, if you understand very well, then you can write it easily, both the formulas. So how to remember it? We will learn, we will look at it, how to remember it. So let's look at the formula number 1 first of all. How to write if the given function is in the format of f of x plus h. तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को स्टार्ट करते हैं f of x and h to the power will be 0. We don't write it because किसी का भी पावर अगर 0 रखते हैं किसी नंबर का तो वो वैल्यू 1 हो जाती है. So we don't normally write it. Just for your understanding, I have written it here. Then next part we will be in the next term. We will keep increasing the power of h. So here h power will be 1. जितनी भी पावर h की हम रखेंगे उतना ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में हम लिखते जाएंगे और उतना ही डिफरेंशिएशन हम f of x का करते जाएंगे. Since h first power is there, first order differentiation of f of x. Now the same way this is the term which I wrote it here. Now same way we will keep increasing power of h. So h की पावर अगर मैं बढ़ाती हूँ तो 2 हो जाएगी. जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उतना ही डेरिवेटिव f of x का हम लिखते जाएंगे. So f double dash of x आ जाएगा. So this is our second term. Now again I will keep increasing h power. h cube it will become, जितनी भी पावर है उतना ही फैक्टोरियल है उतना ही डिफरेंशिएशन है. So 3 times triple differentiation of x, and this we will keep going on till we want the required result. So this is how we will write the Taylor's theorem when the given function is in the form of f of x plus h. So it's quite simple or easy to write it. Similar way we can write the second formula also. There is a easy way how you can remember it, so you don't have to by heart so that you will get confused in this. Same way we will write about the second formula also. We will see how we can write it easily without doing by heart. So same thing we will do it here also when the given function is in the form of f of x. So सबसे पहले f of a आ जाएगा. Into the f of a we will be writing first term, then second term will be x minus a bracket raised to 1. जितनी भी पावर x माइनस a की आ जाएगी उतना ही डिनोमिनेटर हम फैक्टोरियल में लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, और उतना ही डिफरेंशिएशन इसका f of a का आ जाएगा, f dash of a. Now I will keep increasing, this is our first term which I wrote just now. Now we will keep increasing x minus a's power. Now x minus a raised to 2. जितनी भी पावर है उतना ही फैक्टोरियल और उतना ही नंबर का डेरिवेटिव हम निकालेंगे f double dash of a. Now this is the second term. Now I will increase the x minus a's power, it will become cube now. Now since it is cube, 3 factorial will be at the denominator and 3 times I will take a differentiation of f of a. So this is the same way if I will keep increasing x minus a's power, यहाँ पे 4 आ जाएगी तो 4 factorial, 4th derivative of a and keep going on till we want the required result. So this is how we can remember how to write a Taylor's formula. You don't have to really by heart it.
ईजी तरीका है याद रखने के लिए और एग्ज़ाम में लिखने के लिए, बिकॉज द क्वेश्चंस कम्स विच आर बेस्ड ऑन दिस. सो आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी टू रिमेंबर. जस्ट एक दो बार आपको इसको याद करना होगा. नाउ लेट्स सी द question which is based on Taylor's theorem of one variable. So this is given the polynomial, and what is the given question is we have to write or we have to express this polynomial in the powers of x minus 2. x minus 2 की पावर में हमें इसे लिखना है. Now if you look at the given function or the polynomial, it's given in the form of x. It's completely in the form of x. So if you remember, we have written here in the second formula हमने जो देखा है, अगर दिया हुआ function it's a function of x in this format में हो, तो we can apply this equation 2 of Taylor's theorem. Not equation 2, it's a second form we can say of Taylor's theorem. So यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें लिखा है f of a, f dash of a, f double dash of a. तो यहाँ से पता चलता है कि हमें a की वैल्यू पता होना ज़रूरी है. तो a की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे? तो x माइनस a, दैट्स द थिंग विच वी हैव टू यूज़ इट. सो जब भी हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वी हैव टू एक्सप्रेस इन द पावर्स ऑफ समथिंग. यहाँ पे जैसे लिखा है कि x माइनस 2 की पावर में हमें शो करना है. सो दिस विल बी, वी विल कंपेयर दिस वन विथ x माइनस a, क्योंकि x माइनस ए जो है टर्म हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं, तो उसके साथ हमें उसे को कंपेयर करना है. एक्स एस विल गेट कैंसल्ड. सो एज वैल्यू वी विल गेट इट एज 2. नाउ ए की वैल्यू तो हमें पता चल चुकी है. नाउ इफ़ यू लुक एट द फॉर्मूला, आई विल राइट दिस फॉर्मूला अगेन हियर. सो विच इज़ फॉर f of x function. So I wrote it the same formula which we have seen before. Now we know the a's value which is equal to 2. We got it. So जहाँ पे भी मुझे a नज़र आ रहा है यहाँ पे इस इक्वेशन में टेलर्स थ्योरम में, तो उसकी जगह मैं 2 वैल्यू लिख देती हूँ, तो ये काफ़ी easy होगा. Now with the question, if you look, they have asked to expand the given function or express the given function in the powers of x minus 2. मतलब जो फाइनल आंसर जो चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, in the powers of x minus 2. These are the powers of x minus 2. इस इक्वेशन में हम देखते हैं तो ये powers of x minus 2. So final result we want in this format. So that's why we are not going to do anything with this. तो ये जो टर्म्स है जो ये ऐसी ही रहेंगी यहाँ पे. The things which we want to replace here is f of 2, ये f dash of 2, f double dash of 2, f triple dash out of 2, that we don't want. So we have to simplify and find those values. तो इससे पता चलता है यहाँ पे हमें f dash of 2 निकालना है. f dash of 2 कब निकलेगा? जब हम f dash of x फाइंड आउट करेंगे और उसमें हम x की वैल्यू अगर जब हम 2 रख देते हैं, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 2, वी विल गेट f dash of 2. सिमिलरली f double dash of 2 हमें निकालने के लिए सबसे पहले f double dash of x निकालना होगा और उसकी जगह x की जगह 2 रखेंगे तो f double dash of 2 आ जाएगा. सेम वे अगर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हम निकालते हैं f of x का और उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल टू 2, वी विल गेट f triple dash of 2. So that's how we will proceed with it. So let's start with finding differentiation of f of x. So सबसे पहले जो फंक्शन f of x का है वैसे ही ले लेंगे और x इज इक्वल टू 2 वी विल कीप इट. तो जहाँ पे भी x है 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया और उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो आ गया 45. Now I will keep differentiating this. यहाँ पे first order differentiation किया हुआ है f dash of x. So this is the regular how we differentiate it. Same way 6x square plus 14x plus x. इसका 14x, इसका 1 and this one will be 6x square. Now in this I will simply write or simply replace x with 2 to get f dash of 2. So wherever it is x, जहाँ पे भी इसमें मैंने x है वहाँ पे भी 2 रखा हुआ है. Rest of the things are as it is. So and after calculation I got 53
Now to get f double dash of x, again differentiate one more time. So अगर 6x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 12x आ जाएगा, 14x का डिफ्रेंशिएशन 14, 1 का तो 0 हो जाएगा. नाउ उसमें हम 2 रख देते हैं जहाँ पे भी हमें x नज़र आता है. So simply we replaced x with 2, rest of the thing as it is. So I got final as a 38. Now one more time I will differentiate it. So 12x का हो जाएगा 12 and 14 का differentiation it will be constant because it will be 0 because it's a constant. Now x की value again I will replace it with 2. So simply I got it 12 because there is no as such x over there. Now after if I differentiate one more time it will be 0, constant का differentiation 0 होता है. So this is how we found the value of f dash of 2, f double dash of 2 and f triple dash of 2 as well. So after getting all these values we have to keep it back in equation 1 which was the Taylor's theorem where we applied Taylor's theorem और जिसमें हमने f of 2, f dash of 2 ये सब जो लिखा था उसकी जगह पे हमने जो वैल्यूज़ अगर फाइंड आउट की है वो सारी वहाँ पे रख देंगे. ऑन दिस x minus 2 जो भी है x minus 2 की पावर एंड फैक्टोरियल दोज थिंग वी विल बी कीपिंग एज इट इज़ बिकॉज दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन. वी हैव टू एक्सप्रेस गिवन पॉलिनोमियल इन द पावर ऑफ x minus 2. तो वो सारी x minus की टर्म जो भी है वो वैसे की वैसे ही रह जाएंगी. And this will be this factorial we just simplified it over here. So final answer, this is what we got it here. So if you look at the whole question, it's quite simple. If you could understand the Taylor's theorem, how to write it, that formula. After that it's quite easy. We found the value of a, then we simply found out all the differentiation of given function, and in that we place the value of a whatever we found it, and that's how after substituting in the equation of Taylor's theorem we got the final answer. Like given expression we could express or expand it in the power of x minus whatever it has been given. If this is clear for you, then to understand Taylor's theorem in second variable it will be quite easy because that is based on this theorem. This is based on one variable theorem. I hope it is very clear for you. Thank you.